Hello friends, welcome you all to the code world. So in this tutorial we are going to see about a X pattern. So this is our X pattern. So let's start. I have copied the previous code only because I don't want to waste your time, and I will don't worry, I will explain this code fully with deep in detail. So let's start. First of all, let's count a row and column. So this is our first row, second row, third row, fourth row, fifth row, and sixth row. So for sixth row, seven row we have taken. I means row and J means column. Okay. So we have taken 7 row and 7 columns. Columns means this. This is first column. This is second. This is second. This is third, fourth, fifth, sixth. Okay. So 7 column we have taken. So what we are doing here. So first we have taken the condition if statement, if condition, and okay, let me select. First of I will explain this much. So what it says, our row, if our row is 0 and our column is 1, okay, our row should be 0 and 0 means this row, okay, first row, and column equals to 1 means not a 0th column should be 1, it should start from a 1 column, okay. Then print asterisk, okay, and afterward this one, what this state, if our row is 1 means now this fifth line, okay, now this fifth line, okay, if our row is this one and then column should be 2, so this is second column. Here you are seeing the X pattern, okay, like this only we will go a particular row and column, 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 and then we will print direct asterisk, okay. So we have finished. So what this did, this said second row means this is first row, this is second row, and third column means this star, okay. And what this says, okay, yeah, what this says that our row should be 3 and column should be 4. So our third row is 0th row, first row, second row, and third row, okay. So our row should be third row and column should be 4th. So this, it will print this star only where my cursor is moving, so it will print this star, okay. Where cursor is bringing it will print that star, okay. Now fourth row and fifth column, now fourth row and fifth column means here where my cursor is blinking, here, okay. And let me swipe it. Now fifth row and sixth column, so fifth row and sixth column means, so our we have, this is fifth row and sixth column, okay. Fifth row and sixth column means it will print this one, okay, where my cursor is bringing blinking, it will print that column, okay. And like this only, then again we will start from a first row and sixth column. So our first row is this one, this is our first row, and sixth column is this one, okay. And afterward we will print then our row should be I equal to 1 and J should be 5 because we have print this one, we want to print this star, okay. So let's see, we have a, what we have discussing, we have discussed that our row should I equals to 1 and J should be 5, okay. Let's see, perfect, I equals to 1 and J should be 5, okay. And afterward our I should be 3 and 2, J should be 2, and that after that I equals to 4 and J should be 1, and after that I equals to 5, J should be 0, means what, this one, it will print this line. So let me explain once again in Hindi. So हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ये, हाँ,
पहले क्या हो रहा है, हम लोग दो लूप लिए इधर, फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप फॉर लूप. तो फर्स्ट लूप इज फॉर रो पर्पस, ओके, एंड सेकेंड लूप इज फॉर कॉलम पर्पस. तो आई को रो मानते हैं और जे को कॉलम मानते हैं, ठीक है. तो हम लोग का ये जो होता है, ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ वो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया, ये फिफ्थ रो, एंड दिस इज और सिक्स्थ रो, ओके. और कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये इसके बाजू में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ कॉलम, ओके. सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा स्टार किधर है, पहले हमें कहाँ प्रिंट करना है, हमारा रो स्टार्ट होता है जब भी हम लोग इसमें मतलब लूप में लिखते हैं, वो काउंट करता है जीरो इंडेक्स से एन नंबर तक. मतलब जीरो से, हम लोग ने एन का कितना नंबर दिया, 7, तो जीरो से 6 नंबर तक ये जाएगा, लास्ट वाला काउंट नहीं होता. तो जीरो से 6 तक काउंट होगा, ठीक है. तो और हम लोग को पहला रो कौन सा है, जीरोथ रो, और पहला कॉलम को हम लोग बोलेंगे जीरो कॉलम, ठीक है. तो हम लोग का इधर हम लोग ने प्रिंट नहीं किया है, तो हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो मीन्स जीरोथ रो, एंड दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो, जीरो रो, एंड कॉलम इज 1, ओके. तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये वाला जहाँ ब्लिंकिंग हो रहा है कर्सर. फिर उसके बाद हम लोग का रो कौन सा, फर्स्ट रो आवर, फिर हम लोग का ये वाला रो हो जाएगा, ये फर्स्ट रो हो गया. और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो इधर फर्स्ट कॉलम इधर हो गया, तो हम लोग का सेकंड कॉलम हो जाएगा. इसके लिए j इक्वल्स टू 2 किया, ठीक है. वैसे ही एक एक के लिए करना. फिर इधर क्या कंडीशन आ जाएगा, इधर हमारा थर्ड रो है, तो इधर हम लोग का थर्ड रो है, तो ये रो थर्ड हो जाएगा. और कॉलम हम लोग का इधर सेकंड कॉलम है, तो यहाँ थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है. तो वैसे करते हैं हम लोग को पूरा एक साइड का, पहले इससे पहले ये वाला प्रिंट करेंगे, फिर ये वाला हम लोग ने प्रिंट किया है, ठीक है. ऐसे अगर ये सब कंडीशन ट्रू है तो हम लोग स्टार प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद नहीं तो स्पेस प्रिंट करके निकल जाएंगे बाहर, ठीक है. लेट्स ट्राई रन इट. यू आर गेटिंग द परफेक्टली एक्सपेक्टेड. तो हमें एक्सपेक्टेड पूरा मिल रहा है. तो होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, आपको नहीं समझ रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट करो बॉक्स में, पर्सनली उसको रिप्लाई दूँ. So thank you for watching, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.